वॉलंटरली मीन्स अपनी मर्जी से, बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना किसी दबाव के, एट एज पर योर ओन फ्री विल you have entered into a contract with someone, right? Jaise see, when we were reading the definitions of offer and acceptance, it was making very clear. See, one person is making an offer to the other person. Why? क्योंकि वो चाहता है, वो अपना उसका एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है एंड वो अपना इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल करना चाहता है, एंड फॉर दैट रीजन ही इज मेकिंग दिस ऑफर टू द अदर पर्सन. ही इज शेयरिंग हिज इंटरेस्ट विद द अदर पर्सन so that he can, I mean, he's able to obtain the assent of that other person to that offer, right? अपनी मर्जी से. And acceptance is when you're giving assent to that offer which was made to you, and that also you have to do अपनी मर्जी से, because freedom of contract, we have article 19, we have our fundamental rights there. Fundamental rights हमें allow करते हैं, right? We have freedom. Fine. So that is what this portion, this part can be, this free consent part can be linked to that. Now, when we say free consent, we would be studying under the Indian Evidence Act. Further, in further module, there's a separate topic which is dealing with the free consent part. So all your fraud, misrepresentation, coercion, mistake, or undue influence, all these come under the category of when there is no free consent. Undue influence means आप एक dominating position में है against the other person, and you misuse that dominating position in order to obtain an unfair advantage over that person, right? That is not free consent. That person was in position of authority, misuse that position, and आपसे वो acceptance दिलवाया. That is not free consent. Fraud. A person intentionally deceived you. उसने intentionally means he wanted that to happen. He knew what would be the consequence and he desired the consequences, right? Intention. See, whenever we distinguish between intention and knowledge, there's a simple mathematical formula which you can take up. Intention is equal to knowledge of the consequences plus desirability of those consequences, right? So जब भी हम एक डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं और कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं between intention and knowledge, this is one of the most important points which we need to understand. Intention involves knowledge, but intention is knowledge plus desirability, right? You know that this is going to happen, and at the same time you desire, you want that to happen, right? So that want is lacking obviously in case of knowledge. Knowledge means you know. Desirability means you know that is going to happen and you make sure that it happens, right? So this is a slight difference between intention and knowledge. Now, intentionally deceive means आप जानबूझ के सामने वाले को उल्लू बनाते हो. आप जानबूझ के, intentionally deceive means you are fooling the other person. You know that what you are conveying to the other person is not true, is not correct, but still आप उसको वो चीज convey करते हो, and you make the other person believe. शायद I'll just take your question, give me a moment. So you know that the facts which you are stating to the other person, या जो भी उस product, good या service से related आप जो भी सामने वाले को बता रहे हो, you know that it is false, but you make the other person believe by constantly repeating it कि नहीं, this is absolutely right, this thing is absolutely right. I mean, you basically misrepresent the facts to him intentionally, right? So that is what intention to deceive है. Intention to deceive है, fraud हुआ है, then also one can say that consent was not free. हाँ, ये जरूर होगा कि when you are entering into that contract, तब आपको नहीं पता that your intention has been obtained through fraud, but later on you can discover that, and starting from that period the contract becomes voidable in nature, right? हमने पढ़ा था उस दिन voidable क्या होता है. Voidable means now the ball is in the court of the person against whom fraud has been committed. मुझे किसी ने उल्लू बनाया, intentionally उल्लू बनाया. क्यों? क्योंकि उसको कुछ एडवांटेज गेन करना था, and that is the reason.
So now I discovered, so we had entered into that contract and now I discovered that मेरे से तो fraud किया है इसने, जो भी उसने बताया था वैसा तो कुछ भी नहीं है. This product is defective, internal defect था, and he should have told me because this is something which I could not have known, right? So now, starting from the time you have discovered the fraud, वो contract voidable बन जाता है, which means it is upon you. If you wish to continue with it, you can continue with it. It will become valid in nature. If you want, you can bring it to an end. You can get it terminated, right? You can get it terminated. You can bring it to an end. वो void बन जाएगा तब. Fine. So that is what voidability means. You get option. If you want, you can continue with it knowing कि भाई मेरे साथ तो fraud हुआ है या मेरा consent was not freely given, coercion था, threat, force use किया मेरे against, right? So there are many such options. Yes, Shahid, before I move on to the second essential, if you want to ask something, you may please. Yes, ma'am. I have question about the intention Hmm. that we also read in the IPC. Is it Yes. same, slightly different, ma'am? Intention in the contract जो हम consider करते हैं same as IPC और यहाँ कुछ slightly different है? My There is question. no difference. There is no Same. difference. Yes, intention will always remain intention. Intention always remains intention. See, intention का मतलब ये होता है that मैंने बताया. See, वहां पर आप उसका वो फॉर्म देख रहे हैं that person intended to cause death. Person intended to cause bodily injury. So we are relating that intention to a crime. Here we are talking about, say for example, intention of parties to enter into a contract, right? इंटेंशन सेम ही है, आप उसको किस चीज से रिलेट करते हो, दैट ब्रिंग्स इन द डिफरेंस. इंटेंशन टू कमिट ऑफेंस है या इंटेंशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, इंटेंशन इंटेंशन ही रहेगा. एंड आई टोल्ड यू व्हाट इंटेंशन इज. आई सेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंटेंशन, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमेशा याद रखना, हमेशा याद रहेगा व्हाट इंटेंशन इज. माइंड यू, बिकॉज सी दिस इज समथिंग जो मोस्ट बेसिक है. I am very sorry to say this, but I mean, a few days ago, I was having this. Uh, this I was taking a presentation of some student, and that student, when asked what is the difference between intention and motive, answered, "दोनों same होते हैं. They are similar in nature." When I asked for an example, obviously the student was not able to give the example because उस time तो बस बोल दिया कि intention, motive सब कुछ same होता है. But then no, it is not the case. And because आप लोग अभी fresh IPC पढ़ रहे हो, तो you must be well aware of this, right? So just understand that intention is a state of mind, state of doing something. It may be an intention to do something bad, it may be an intention to do something good. Intention in itself is not a bad thing. Are you getting my point? Yes, ma'am. Got it. Right. Yeah. So what we have to understand is there can be an intention to commit offense, there can be an intention to enter into a legal relationship or a contract. And intention as such, I told you that mathematical equation which I was telling you was intention is equal to knowledge of the consequences plus desirability of the consequences. राइट. अब ये कॉन्सिक्वेंसेज क्या है एंड नॉलेज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, दैट विल डिपेंड अपॉन हम इंटेंशन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं. क्लास, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, दैट जब भी हम इंटेंशन या इन चीजों की बात करते हैं, वन हैज टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉइंट दैट हम इन कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड को. In what context the word is being used, we accordingly interpret or we accordingly try to understand the meaning of that word in context in which it is being used. So this is a classic example now because Shahid has asked a question here. That's why I'm telling you. क्योंकि intention intention ही रहेगी, जिसके साथ यूज करोगे वो डिटर्मिन करेगा कि how it has to be interpreted, right? Okay, so I think I have answered the question here. Moving on to the next essential. It says free consent of parties competent to contract. लिखा नहीं है यहाँ पे, but what do we mean by competent to contract is legally competent to contract होने चाहिए. And as you can see under section 11, just immediately after section 10, it tells you who all are competent to contract. तीन चीजें लिखी है वहां.
right? We would be discussing all these provisions later, because they are further, we have to discuss this portion also. There's a separate module, but abhi jo hai, abhi hame basic jo understand karna as per section, as per module 2. Just let's first complete that portion. So it says competent to contract, legal competency की जब बात आती है, तीन चीजें याद रखनी है हमने. First is, person should have attained the age of majority. That is what section 11 says. Every person is competent to contract who is of the age of majority, according to the law to which he is subject. Now, what we are trying to say here is, if in a particular act, if in a particular statute, written law, specifically कोई age mentioned है, then that would be considered to be the age of majority. If any specific act does not, if any act does not specifically mention any age, but just says person should be of majority or should have attained the age of majority, we refer to, as given here in the footnote also, we refer to the Indian Majority Act. इंडिया में एक एक्ट है which goes by the name of Indian Majority Act, जो हम हमेशा हमने एक मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस, वी थिंक कि अच्छा एज ऑफ मेजोरिटी मतलब 18 साल. कहाँ लिखा है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट इज द सोर्स, राइट? इंडियन मेजोरिटी एक्ट इज द सोर्स which clearly provides you with this. So you need to remember that, say for example, Hindu Marriage Act बोलता है जब age of majority, तो वो वहां पे for the bride, for the bridegroom separate age mention करता है. So for the purpose of Hindu Marriage Act, we need to go with that. But in general now, when the act only mentions age of majority but does not specify the age, one has to and has to. There is no escape, because Indian Majority Act is the law which is governing that subject, right? So Indian Majority Act is the answer for 18 साल का जो एज ऑफ मेजोरिटी है, कॉमन सब फॉर एवरीवन, विद irrespective लड़का लड़की or whatever, right? So that is what you have to understand. So age of majority. The other one, when we talk about competent to contract, legally competent to contract, apart from the age of majority, the second thing is person should be of sound mind. Person should be of sound mind. What do we mean by that कि sound mind होना चाहिए? Sound mind से हमारा simple शब्दों में समझो, sound mind का मतलब ये है कि a person should be capable of taking his decisions or her decisions on his or her own, right? You should be mentally developed to take your decisions on your own. You should be able to understand the nature of the act you are trying to do. You should be able to understand what would be the consequences of the act if you would do that act, right? So this will determine your this will determine the soundness of mind, right? Who is of sound mind? Who, if I just ask you who is of sound mind, so answer is simple: the person capable of taking his or her own decisions. Second, person who is capable of understanding the nature of the act he is doing. Thirdly, the person who is capable of understanding or knowing the consequences which may occur, right? क्या सही है क्या गलत है उससे उसकी पहचान हो. Fine. So that is what we mean by when we say who is of sound mind. Now, इससे related, Dikshan, just give me a moment. इससे related, yes, section 12 is there in the Indian Contract Act, which is telling you what do we mean by sound mind. आप IPC पढ़ रहे हो. By now you know that I always try to give example from by touching other fields of law also. कभी consti में पहुंच गए, कभी IPC पहुंच गए, कभी tort पहुंच गए. Those areas of law which you know, right? So now, जब आप general defenses पढ़ते हो in the Indian Penal Code, general defenses, or what we also call as general exceptions, there is a defense known as insanity.
insanity. So when we talk about unsoundness of mind, yeah, incapacity to contract, so there are different heads which are covered there. Age, infancy hota hai, then intoxication hota hai, then insanity hota hai. All these three come under the category of incapacity, right? So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसी unsound mind की. What? So what this particular provision is trying to tell you, section 12, which says, see, there is a difference between legal insanity and medical insanity. What do we mean by legal insanity, medical insanity? या legally sound mind, medically legally unsound mind, या medically unsound mind का क्या मतलब है? I'm repeating myself. Difference between legally unsound mind and medically unsound mind. In legally unsound mind, we are only concerned about, we are only bothered about what was the state of mind of that person at the time of entering into contract. There are people who are suffering from mental ailment who are not suffering from permanent mental ailment, right? They may get bouts, they may have this mental instability at different intervals, right? Constant permanent in nature nahi hai. Fine. So in such kind of cases, legal insanity, what legal unsoundness of mind हम क्या कह रहे हैं, या legal soundness of mind से हमारा मतलब ये है कि when you are entering into the contract, then and that time you should be of sound mind. That is, at that time you should be in a position to understand the nature of the act you are doing, taking up, and the consequences which may occur after the act, right? Okay. What do we mean by medical unsoundness of mind or medical insanity? Say medical unsoundness of mind का मतलब है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो temporary या permanent in nature है. We are concerned with the fact that this person is mentally unstable. चाहे वो टेम्पररी इन नेचर हो, चाहे वो परमानेंट इन नेचर हो, पर्सन वुड बी टैग्ड एज मेडिकली अनसाउंड माइंड, राइट? या मेडिकली मेंटली अनस्टेबल हुआ वो, उसे हम मेडिकल इंसैनिटी बोलते हैं, बिकॉज देयर इन medical records say that this person is not mentally stable, right? Irrespective of the fact that mental ailment is temporary in nature or permanent in nature. Legal insanity कहता है या legal soundness of mind कहता है, see, we are not concerned with the medical aspect that much. What we are trying to say and what we will try to look for, even if there are medical records of the person that he or she is suffering from some kind of mental ailment, what we are trying to see, what we are trying to determine is that at the time when that person was entering into the contract, or at the time when that person was committing the offense, what was his state of mind then, right? So that is what do we have to understand. So यहाँ पे जो लिखा है कि who is of sound mind means at the time of entering into the contract, the person should be of sound mind, capable of understanding the true nature of the act and the consequences which may occur. Yes, Dikshant, you can ask your question. Ma'am, you have given the answer. I was actually asking what is the meaning of sound mind here. Okay. Intoxicated person is also included or not? Yes, it is Same. included. It is included. You can see the illustration given in section 12. It mentions intoxication also. Right? Okay, ma'am. So वही चीज Ma'am, है. See, it's that a is the request, reason. ma'am. Yes. Yes, Dikshant. Will you please switch on the camera? You want me to switch on the camera? हाँ, just a moment, please. So the thing is that पीछे sunlight था तो काफी dark आ रहा था video. That is the reason I just switched it off. Fine, no problem. I'll just Ma'am, switch it I off. have Yes, Shahid. doubt about legal unsoundness mind and medical unsoundness mind. As you told that medical unsoundness is doesn't matter, but how we can prove नहीं without a medical शाहिद, report? आई नेवर सेड, सी यही बात है, हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, वुड बी लॉयर्स है. आई नेवर सेड दैट इट डजंट मैटर. आई जस्ट सेड दैट देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ दीज टू थिंग्स. When we say legally unsound, it's a different thing. When we say medically unsound, it's a different thing. The interpretation given to it is different. अब शायद अपना क्वेश्चन पहले आप कंप्लीट करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. So my question is how we can prove without medical unsound medical report that person is unsound during the making contract. Your question is very valid. See, how we can determine is there are various factors. Yes, medical records are submitted in the court for that reason also, right? In order to prove that person was not of sound mind
Yes, medical records are there, but the court, they may have some effect, but they are not conclusive evidence to decide whether the person was of sound mind or not. What exactly has to be seen is at the time of making of the contract. And what do we mean by, how can we determine at the time of making of the contract what was the situation? The acts of the person. आप इंटेंशन कैसे डिटर्मिन करते हैं किसी की, वो आप उसके, वी कैन नॉट एंटर इनसाइड द माइंड ऑफ समवन एंड सी कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में, that person is intending to do a wrongful act or he is an innocent person. We cannot determine that. His or her actions only help us in determining it, right? Now I can just give you an example here. uh, Okay, so there is this case, I suppose, in your IPC. I don't know, abhi wo case hai still in existence in your case material or not. But when we were students, we used to study that case. Basdev versus State of Pepsu करके case है in your IPC का case material. Now, Basdev versus State of Pepsu was dealing with, or is covered under one of the general defenses. This person, Basdev, he was a small time employee. He was a small time employee in the defense forces, right? Uh, he had gone to attend a particular wedding, एक मैरिज अटेंड करने के लिए नेक्स्ट नेबरिंग विलेज में ही हैड गॉन. एंड ऑब्वियसली बिकॉज वहां पे तो ऐसा था दैट और मेनी अदर्स फ्रॉम दैट विलेज आल्सो हैड गॉन टू द अदर विलेज टू अटेंड द वेडिंग. He was highly intoxicated, heavily intoxicated rather. Right, he was heavily intoxicated, and uh, he wanted to occupy a specific seating arrangement there in that wedding. वो एक particular chair occupy करना चाहता था, वहां बैठना चाहता था in that wedding party. There was a child who did not let him do that, who was very adamant to move from there. This person got agitated and अपने पॉकेट से उसने पिस्टल निकाला एंड सीधा उस बच्चे को गोली मारी. गोली मारने के बाद भागने की कोशिश करी, पकड़ा गया because it was a wedding ceremony. Obviously there were many people around, so he could not run away, and moreover he was in heavily intoxicated condition. पकड़ा गया तो माफी भी मांगने लगा. आगे जब कोर्ट में केस हुआ, so then the defense of this unsoundness of mind was being claimed, right? कोर्ट ने बोला his actions of after shooting, trying to run away from the place, and when caught trying to ask for forgiveness, do these mean, I mean, do these acts of his, they do these mean that he was not knowing what he was doing? Obviously he knew what he has done. That is the reason he was trying to run away from the spot. ये मैं सिर्फ उस केस का एक छोटा सा पार्ट आपको बता रही हूँ. He knew what he did was wrong. That is the reason he tried to run away. He knew what he was doing was wrong. That is the reason when caught, he was asking for mercy. Right? So, that is what. ये जो mental elements होते हैं, these mental elements are mostly in our law, in our courtrooms, are determined by the actions of the person. हम हमेशा ये बोलते हैं that there has to be some overt act with the help of which we will be able to determine what that person was thinking. अब जब हम offenses against property आप पढ़ोगे आईपीसी में, dishonesty पढ़ोगे, अब dishonest है बंदा, वो आपको उसके दिमाग से पढ़ के तो नहीं पता चलता, उसके actions ही बताएंगे कि वो dishonest way में उसने act किया या नहीं किया, right? So mental elements are such that only your actions are the best judges, or are the best, what should I say, the best mirrors of determining what is going on inside your mind. Shayad, have I answered your question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it. Aman, you have been raising your hand. Tell me. मैम ये केस है मैम, इसमें लीडिंग केस लॉज में बासदेव है ना? वर्सेस हाँ, वही मैंने बोला क्योंकि एक इम्पोर्टेंट केस है. मैं आज तक भी, see, I read it when I was a student of LLB.
यही लॉ फैक्ट में मैंने तब से पढ़ा हुआ है, और जब जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, कोई भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को लेके क्वेश्चन आता है या कुछ डिस्कशन होता है, या जैसे शाहिद ने जो क्वेश्चन पूछा, दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच इज often asked, right? That how will we determine, if you're saying legal or medical insanity में difference है, and how will we determine then कि at the time of commission of that act or at the time of entering into contract, what was the state of mind of that person? Answer is this: his or her actions will help you in determining that. His or her actions immediately before that act is done, his or her actions immediately, I mean at the time of doing the act also, and immediately after, right? Ma'am, both voluntary and involuntary intoxication is considered. See, yes, this distinction between voluntary and involuntary intoxication is there in existence under the Indian Penal Code, because therein we are talking about offense, and therein we are talking about general defenses, जो absolute defenses है. They absolve you completely from the liability of the offense, right? यहाँ पे the situation is different. यहाँ पे the situation is that I mean, यहाँ पे there is no need to distinguish between person was involuntary or voluntarily intoxicated, क्योंकि हम कोई गलत काम के बारे में बात नहीं कर रहे. We are only trying to find out whether that person out of his own free will had entered into contract. So even if he is voluntarily heavily intoxicated, one would not be able to easily determine in that case that at that time he was in his senses to understand what he was doing was right or wrong, right? So that kind of distinction has not been specifically made here for the purposes of Indian Contract Act. For the purpose of Indian Penal Code, yes, that difference is there, right? Okay, I would like to proceed further then. तो अब आगे ये कहता है, for a lawful consideration and with a lawful object. I had told you about this thing in the last class itself, when we were talking about enforceability factor, and when we were talking about this thing, that भाई enforceable वो तभी होगा जब आप उसके अगेंस्ट लीगल रेमेडी क्लेम करने कोर्ट जा सकते हो. लीगल रेमेडी क्लेम करने कोर्ट आप तभी जा पाओगे जब वो लॉफुल चीज है. आप गलत, सी वी ऑलवेज से, आई मीन लॉ में एक पॉइंट बोला जाता है कि वन हु इज गोइंग टू द कोर्ट हैज टू गो विद क्लीन हैंड्स, और वन हु इज सीकिंग लीगल रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट हैज टू गो विद क्लीन हैंड्स, राइट? तो आप गलत हो, आपने खुद गलत काम किया है, यू कैन नॉट जस्ट गो टू द कोर्ट एंड क्लेम रेमेडी. इफ योर गिल्ट इज प्रूव्ड देयर इन द कोर्ट, देन पासा उल्टा पलट पड़ जाएगा. Yeah, the situation is, if you're talking about the fact lawful consideration या lawful object है या नहीं है, अगर lawful नहीं है तो वो contract ही valid नहीं है, right? क्योंकि फिर उसको आगे वापस flashback में चलते हैं. We had in the first class we had discussed this thing, that one of the difference between torts and contract यही है. Tort में है that duties are primarily fixed by law. How you are supposed to act, what you're supposed to do, or what you're supposed to refrain from doing, the law is deciding for you. In case of contract, duties are fixed, primarily fixed by parties. But yes, it comes with a rider that parties also have to respect the law of the land. They cannot make such clauses in that contract which are against the law, right? So that is some, and अगर आपने ऐसा बना भी लिया, उस पे आप ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर भी रहे हैं, फाइन, आप करते रहिए. ये एनफोर्सेबिलिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन की बातें तब आती है जब केस कोर्ट में पहुंचेगा. अदरवाइज, आई मीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बिजनेस हाउसेज और बिग बिजनेस ट्रांजैक्शंस जहां इन्वॉल्व होती है, वहां कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो तो फूक फूक के कदम रखते हैं. इन जनरल आई एम टॉकिंग, जैसे हमने शार्प शूटर का एग्जांपल डिस्कस किया था उस दिन. आपने उसको मारने के पैसे दिए, उसने मार दिया, आपने उसको पैसे दे दिए, खत्म हो गया बात, राइट? प्रॉब्लम तब आती है जब आपने उसको मारने को बोला और बोला मारने के बाद पैसे मिलेंगे, उसने मार दिया, आपने पैसे देने से मना कर दिया. दैट इज व्हेन द क्वेश्चन ऑफ एनफोर्सेबिलिटी और नॉन एनफोर्सेबिलिटी विल अराइज, राइट? दैट इज व्हाट. अदरवाइज ऐसी बातें क्यों नहीं होती बीच में, लोगों के होती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं बीच में. बट देन पॉइंट इज, ये एनफोर्सेबल होगा इन द सेंस आप गलत होने पे कोई रेमेडी क्लेम कर सकते हैं या नहीं कोर्ट से,
that will be determined upon the fact कि वो lawful था या नहीं था, right? Now, Section 23 of the Indian Contract Act gives you certain instances, right? Or basically, you can say it elaborates what amounts to lawful consideration, what amounts to lawful object. वो basically it is trying to tell you, वो lay down जो करता है वो examples नहीं है lawfulness के. वो ये कहता है कि हर contract में consideration और object lawful होगा, unless then the exceptions have been laid down, right? Then the exceptions have been laid down there. If it is against the public policy, if it is against the uh, it is of harm to a person's body or property, right? ये चीज वहां पे क्लियरली दी हुई है. दैट इज द रीजन मैं ये शार्प शूटर वाला एग्जांपल दिया. इट इज गिवन अंडर सेक्शन 23. इट इज वन ऑफ द इंस्टेंसेस वेयर इन इफ प्रेजेंट वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता, right? So this is one of the requirements. Now further it says, and are not hereby expressly declared to be void. I will take you to this portion. Can you see this heading on my screen? Void agreements, section 24 to 30. Yes, ma'am. Right. So when we mean, when it is saying here that and does not fall under the category of the agreements which are hereby expressly declared to be void. Expressly का मतलब ये होता है that by expression, it can be in written form, it can be in oral form. But obviously, if you're talking in terms of a written statute, we are trying to say that it has not been expressly or specifically written in the act, right? So that is what. Now in this case, express means up by words या written form, but we are talking about the act, so we are specifically meaning कि written form में होना चाहिए. Implied का मतलब होता है conduct. हम उसके भी आगे examples देखेंगे. Moment we'll proceed to certain provisions between section 2 and 10, we'll be discussing about implied and express also specifically. But यहाँ पर जब वो ये कह रहा है कि it should not be hereby expressly declared to be void, we are trying to mean that it should not fall under the category of instances which are covered under 24 to 30, because 24 to 30 under the Indian Contract Act are the agreements which have been expressly declared to be void. You can see from the heading of these group of sections itself, right? So let me take you back to section 10 now. This much have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Further then it says, nothing herein contained shall affect any law in force in India and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witnesses, or any law relating to the registration of documents. See, by these two three lines, वैसे तो एक ही लाइन है, कोई फुल स्टॉप तो है नहीं, ये एक लाइन जो यहाँ पे लिखी है सेक्शन 10 में अंडर, ये कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ये एक फर्दर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है, इलैबोरेट कर रहा है. वो ये कहना चाह रहा है कि देखिए, just a second, a student wants to enter the class after 1 hour is over. Let me just allow, please. मैं बस एक बीच में वो रुकावट के लिए खेद होता है ना, बिकॉज अब वो बीच में हो गया है, तो लेट मी से समथिंग एंड देन आई प्रोसीड टू व्हाट आई वाज डिस्कसिंग. सी, बार बार बोलने के बाद भी आई थिंक आई रियलाइज दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग द गूगल क्लासरूम एंड हु आर ट्राइंग टू जॉइन द क्लासेस थ्रू their पर्सनल ईमेल आईडीज. डू नॉट डू दैट, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट, क्योंकि मैंने जिस दिन पूरा चेक कर लिया एंड बिकॉज I have been doing this. मैं फिर वो स्टूडेंट को बाहर कर देती हूँ क्लासरूम से एंड क्लास से, and I ask that student to join through the institutional ID only. See, all of you are having institutional IDs. What is the problem in using it? Use करो.
अपना पर्सनल आईडी प्लीज यूज मत कीजिए, कभी गलती से हो जाता है, अंडरस्टैंड, बिकॉज दोनों ही जीमेल से ही ऑपरेट हो रहे हैं, बट आपका पर्सनल जो भी होगा एंड ये भी थोड़ा सा जस्ट बी लिटिल केयरफुल, दैट इज इट. Okay. See, this part here, which is trying to say nothing herein contained, that means nothing contained in this particular enactment shall affect any law in force in India. That means ये जो यहाँ लिखा है सेक्शन 10 में, ये जनरल रिक्वायरमेंट्स है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट की जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं. इसके अलावा इफ देयर इज एनी एक्ट जो इसके अलावा और कोई कंडीशंस भी ले डाउन करता है, जैसे that the contract has to be made in writing or it has to be in the presence of witnesses, या उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, राइट? अगर देयर इज सम प्रोविजन और देयर इज सम अदर लॉ, स्पेसिफिक लॉ डीलिंग विद से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लॉ है which is making it mandatory that the contract in that case has to be in writing. Section 10 में हमने essentials में देखा, कहीं नहीं लिखा हुआ कि it has to be in writing. It just says with free consent, competent to contract, lawful consideration, lawful object, not hereby expressly declared to be void. These are the only essential elements. It is not saying it has to be in writing. So that is why the second part is trying to tell you that, see, हमने essential elements lay down कर दिए हैं, but nothing which is contained herein will be affecting any other law in force in India जहां पर contract is required to either be made in writing or in the presence of certain witnesses or any law which is relating to registration of documents. कि इन essentials के अलावा अगर कोई दूसरा law कोई और addition करता है in reference to the essentials, we are not going to suppress it, we are not going to oppose it, we are not going to question it, right? ये जनरल लॉ है, वो स्पेसिफिक लॉ होगा. ये जनरल लॉ है, जनरली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल होगा, राइट? बेसिक है. एंड वो जो होगा वो स्पेसिफिक लॉ होगा ओनली इन रिलेशन टू दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, वेयर इन उस एक पर्पस के लिए इट इज सेइंग दैट इट हैज टू बी इन राइटिंग, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड, इट इज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, राइट? सो दैट इज व्हाट. ये बस because I think एक क्वेश्चन मुझसे शुरू में पूछा भी गया था अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग इन राइटिंग और नॉट, राइट? कि भाई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना जरूरी है या नहीं. एक सिंपल डिस्कस किया था कि पूरे एक्ट में एसेंशियल्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये चीज दैट इट हैज टू बी इन राइटिंग. Yes, we saw an exception under Section 25 of the Indian Contract Act, and here also we are just seeing this thing that generally these are the essentials, but if there is some specific law जहां पे ये वो बोले, अब जैसे सेल डीड है, सेल डीड है, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, सब कुछ कानूनी तौर से करना चाहते हो, सेल डीड एग्जीक्यूट होती है, सब कुछ रिटन फॉर्म में चलता है, एग्जीक्यूट होती है, रजिस्टर होती है, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस होते हैं वहां पे. सो दैट लॉ इज मेकिंग इट मैंडेटरी. सो हियर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैन नॉट क्वेश्चन दैट लॉ. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है भाई आप मेरे भी, मुझे भी समझो, उसको भी समझो, क्योंकि मैं जनरल लॉ हूं, मैं सबको जनरली अप्लाई करूंगा, हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट को जनरली अप्लाई करूंगा, राइट? बट देयर वुड बी अ स्पेसिफिक लॉ जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती हैं. सो फॉर दैट पर्पस उसकी रिक्वायरमेंट फॉलो की जाएंगी. वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट इट. दैट इज व्हाट दिस पार्ट इज टेलिंग यू, ट्राइंग टू टेल यू इन सिंपल वर्ड्स आई हैव टोल्ड यू. हैव यू अंडरस्टूड सेक्शन 10? Yes, ma'am. Anyone Ma'am? having? Yes, please, Jayati. Ma'am, in case of unsoundness of mind, the contract will be void, right? Very good question. See, when we would be discussing this aspect related to consent के पूरा एक मॉड्यूल है उस पे दिया हुआ, जब हम consent के ऊपर डिस्कस करेंगे, so we'll see that एक कैटेगराइजेशन हो रखी है. कैटेगराइजेशन इन द सेंस दैट अगर कुछ तरह के ऐसे मेंटल एलिमेंट्स है, से अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोवर्जन है, if these elements have made this person enter into a so called contract, then in that case वो voidable हो जाता है. Then that is voidable in nature. When we would be discussing mistake,
मिस्टेक, राइट? सी, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. ये आप आईपीसी में भी पढ़ चुके हो. आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर मी टू रीआइटरेट. यू नो दिस थिंग कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, राइट? Mistake of fact is an excuse. Yes, ma'am. Right. So in the Indian Contract Act, there is a distinction between mistake of fact, which can be bilateral in nature, which is unilateral in nature. Bilateral in nature means both the parties are mistaken as to a particular fact in relation to the subject matter of the contract. उस situation में वो void होता है. So generally समझो voidable in nature होगा. But in just one instance given there, uh, mistake of fact, bilateral mistake of fact, it becomes void in nature because वो fulfill हो ही नहीं सकता. It is such kind of a thing that, see, जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो both the parties have to agree on the same thing in the same sense, right? अब यहाँ पर एक चीज ऐसी है, both the parties are mistaken as to a particular subject matter. से फॉर एग्जाम्पल आप अपना कोई से घोड़ा किसी को बेचने की बात कर रहे हो, बिकॉज ऐसे काफी एग्जाम्पल्स आपको इसमें मिलेंगे. बात कर रहे हो, आपने उसको प्रॉमिस का ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, एंड बोथ द पार्टीज वर नॉट इवन अवेयर एट दैट टाइम. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो बनाने की कोशिश कर ली, बट बोथ द पार्टीज वर नॉट अवेयर एट दैट टाइम दैट horse is not even that horse has died. That horse has died, right? Vikas, you are raising your hand. Would you like to मैम ask something? Yes, please. मैम मैम जनरल रूल और स्पेशल रूल ओवर रूल करे एक दूसरे को तो कौन किसको वरीयता देंगे? वेरी गुड. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. ये क्वेश्चन जनरली थर्ड ईयर मतलब जितना ध्यान से, आई एम वेरी हैप्पी विद टचवुड विद योर क्लास, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आई मीन इट्स वेरी गुड टू इंटरेक्ट विद यू ऑल बिकॉज आई लाइक द स्टूडेंट्स who actually apply their mind and ask questions. इस क्लास से हमेशा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. वेरी गुड. See, he's asked a very relevant question. He says, fine, so if there is a general law, जैसे आईपी, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला यही एग्जांपल लेते हैं. अभी हमने सेक्शन 10 में ये जो सेकंड पार्ट पढ़ा, जहां पे ये चीज लिखी है that nothing herein contained shall affect any law in force and not hereby expressly repealed. See, वो ये जो कह रहा है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो सेक्शन 10 में दी है. इसके अलावा अगर कोई और लॉ है जो कोई और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली ले डाउन करता है, so we would not be affecting this that particular law. We will not supersede that particular law. हमारी requirements कुछ है, but उसकी extra जो requirements है, you need to fulfill that. There is a rule जिसे हम कहते हैं रूल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लॉ, राइट? in reference to statute. Interpretation in reference to a will भी हो सकता है, interpretation in reference to treaty भी हो सकता है. So basically what you are doing is you are trying to understand the true intention of the maker of that document, right? Through the words given there. So that is interpretation. अब interpretation of statute का, there is this general rule which says that if there is this what should I say, कॉन्ट्रडिक्शन या कुछ ऐसा, कुछ दो क्लैश होता है दो प्रोविजंस के बीच में या दो डिफरेंट एक्ट्स के बीच में, वन इज जनरल इन नेचर, द अदर इज स्पेसिफिक इन नेचर, राइट? देन इन दैट केस, सी, लॉ ने मतलब लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ बनाया है जो बाद में लॉ बना, वो पूरे होशो आवाज में ही बना है, दे नो दैट देयर इज अ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लॉ आल्सो ऑन दिस एस्पेक्ट. Now they are making some other law which is slightly different from the previous one, right? Yeah, which is giving certain additions in comparison to the previous one. Both the laws have to prevail unless and until बिल्कुल एक दूसरे के contrary हो, तभी होता है कि later in law will be prevailing, right? पर हम अभी उस चीज की बात ही नहीं कर रहे, उसको बिल्कुल साइड में करो. एक जनरल लॉ है, एक स्पेशल लॉ है. Both the laws have to prevail, right? Both the laws will be prevailing. The general has to be interpreted in such a way so as to keep out of its purview the special law. मतलब दोनों को अपनी अपनी फील्ड आप दोगे प्रॉस्पर करने के लिए,
राइट, दोनों को अपना अपना एरिया दोगे, अपना अपना फील्ड दोगे टू प्रॉस्पर। इससे मेरा मतलब ये है दैट जनरल लॉ विल ऑल्सो प्रिवेल, स्पेसिफिक लॉ विल ऑल्सो प्रिवेल। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दूंगी। देयर इज दिस केस लॉ जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ोगे, वेंकट रमना देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर करके केस है, राइट। वेंकट रमना देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। Not getting, again I'm saying I'm not getting into the depth of this case. ये केस आपको कॉन्स्टी में भी आप पढ़ोगे, ये केस आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में फाइनल सेमेस्टर में भी पढ़ोगे। There was a clash between two provisions, two articles of the Indian Constitution. आर्टिकल 25 और 26 में किसी एस्पेक्ट को लेके कॉन्ट्रडिक्शन था। 25 में ये था दैट कोई भी लॉ ऐसा बन सकता है जिससे कि द एंट्री इनटू अ पर्टिकुलर टेम्पल कैन बी मेड ओपन टू ऑल द हिंदूज, राइट। Sorry, ma'am, you are not audible. अच्छा, मैम का क्या? मुझे लगा हमारा क्या। No, no, ma'am is not audible. मैम का माइक ऑफ है। No, no. Yes, am I audible? Yes, ma'am. Yes. हाँ, Yes, okay, ma'am. okay. There was a momentary disconnect. मेरे को एकदम लगा I was just going on and on, but there was no reaction. Okay, so yes, 25 and 26. 25 में मैंने कहा it is mentioning that law can be made wherein the entry into any Hindu temple can be made open to anyone, right? All the Hindus, irrespective of caste and all, right? Now 26 जो है आर्टिकल 26, it gives certain rights to the religious minorities to manage their own religious affairs, right? Right to the religious minorities to manage their own religious affairs. जहाँ पे ये लिखा है कि I mean the religious minorities can decide and take decisions upon their own religious affairs, on their own religious affairs. अब ये वेंकट रमना देवारू was a religious minority denomination. एक लॉ आया, स्टेट लॉ था मद्रास में, मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट, मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट। उस एक्ट में एक प्रोविजन ऐसा था अकॉर्डिंग टू विच एनी एंड एवरी हिंदू पर्सन कैन एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर टेम्पल, राइट। अब वो जो रिलीजियस माइनॉरिटी था उन्होंने ये बोला कि भाई ये हमारा टेम्पल है and article 26 gives us a right to manage our own religious affairs, and that means we would be deciding कि हमारे टेम्पल में कौन एंटर कर सकता है, कौन एंटर नहीं कर सकता। So this law which has been made is against article 26 of the Indian Constitution. It is a fundamental right. ये गलत है। If at one hand Constitution has given us right to act in a particular manner and you are trying to make a law and snatch away that right from us, अब प्रॉब्लम हो गई। 25 क्लियरली बोल रहा है कि भाई टेम्पल कैन बी थ्रोन ओपन टू ऑल द हिंदूज। 26 में आप ये कह रहे हो कि भाई वी बीइंग अ रिलीजियस माइनॉरिटी वी हैव अ राइट टू मैनेज आवर ओन रिलीजियस अफेयर्स व्हिच मे इंक्लूड दिस आल्सो। अब कोर्ट के पास केस आया, कोर्ट हैज टू डिसाइड दिस, हैड टू डिसाइड दिस केस नाउ कि एक तरफ आर्टिकल 25, एक तरफ आर्टिकल 26, ये दोनों जो एस्पेक्ट्स है, दोनों 25 और 26 का एक छोटा छोटा पार्ट है। कोर्ट स्टेटेड दैट सी आर्टिकल 25 की जो हम बात कर रहे हैं, जहां पे थ्रो ओपन द एंट्री की बात है, वो एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोविजन हो गया, स्पेसिफिक राइट है, राइट। जहां आप 26 की बात कर रहे हो, wherein you are saying that religious minorities have the right to manage their religious affairs, that's general in nature. religious affairs में तो कितना कुछ नहीं आएगा कि कोई क्या पूजा होगी, कोई पूजा कैसे होगी, किस टाइम पे होगी, कौन करेगा, these are all religious affairs, right? So it's a very general thing, वो कोई एक specific चीज नहीं है। entry is a specific thing, but managing the religious affairs is a general thing. Now court interpreted it in a manner कि दोनों
जो fundamental rights under the Indian Constitution should be given their value. It was interpreted in a manner that Article 26 will include or will give the right to religious minorities to manage all their religious affairs except for temple entry. I'm repeating myself कि टेम्पल एंट्री पे आर्टिकल 25 स्पेसिफिकली डील कर रहा है. इट इज अ स्पेसिफिक लॉ. वी कैन नॉट रूल आउट दैट. 26 generally worded है कि you can manage your religious affairs. So yes, you continue managing your religious affairs, but yes, temple entry you cannot manage because that is a special law, special entry, special law, special provision, special subject which is dealt with under different section. So that is exactly how we'll be interpreting. अगर एक जनरल लॉ और एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ को उसका वैल्यू दिया जाता है. जनरल लॉ बेशक झुक जाएगा, बट स्पेशल लॉ को उसका वैल्यू जरूर दिया जाएगा. अनलेस एंड अनटिल वो दोनों बिल्कुल एकदम कॉन्ट्ररी इन नेचर हो, बिल्कुल ये हो कि कोई हारमोनियसली आप उसको कर ही नहीं सकते हो, डिसीजन ले सकते, तब कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा प्रिवेल करेगा. बट अदरवाइज ऑलवेज द इंटरप्रिटेशन would be on the lines that both general law and special law should prevail. दोनों को प्रिवेल करना चाहिए. एंड स्पेशल लॉ क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर ही डील करता, वो झुक नहीं जाएगा. वही चीज सेक्शन 10 के इस पार्ट में लिखी है कि वी आर जनरल लॉ, वी आर डीलिंग जनरली विद कॉन्ट्रैक्ट्स. स्पेशल लॉ होंगे लाइक सेल डीड का थिंग, रिटन में होता है सब कुछ, राइट. सो जनरल लॉ उस पे अप्लाई करेगा ही करेगा, बट प्लस द स्पेशल लॉ विच इज गिवन देयर वुड आल्सो बी एडिशनली एप्लीकेबल देयर. उसके लिए फिर आप यहाँ पे आके अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आके कोर्ट में ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे तो नहीं लिखा कि ये रिक्वायरमेंट है, मैंने नहीं किया, ये तो क्या मतलब, कॉन्ट्रैक्ट तो है. कोर्ट विल से ये तो अप्लाई होंगे ही होंगे, बट एडिशनली दैट प्रोविजन विल आल्सो बी एप्लीकेबल, एंड बिकॉज यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ दैट, वैलिड नहीं है, राइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो विकास, यू हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, यू गॉट द आंसर आई सपोज. कुछ ज्यादा ही इलेबोरेटेड आंसर मिल गया, बट यस मैम समझ में आ गया. थैंक यू मैम. यस दीक्षांत. I think there is an maxim, I don't remember, ma'am. कि when two laws are, तो then special law will be prevail. ऐसा कोई एक maxim भी read किए थे, but अभी याद. वो होता है जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट. हाँ, yes ma'am, right. राइट. या ये मैं अगर सी आई टीच इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इन लास्ट सेमेस्टर, इन केस यू विल बी इन माय क्लास, तो ये सब डिस्कस करेंगे हम तब भी. यस दीक्षांत, यू रेज्ड योर हैंड. I still have confusion between void contract and voidable contract. मैम Okay. एग्जामिनेशन एंट्रेंस के दौरान मैम जो मैंने पढ़ा था कि चाइल्ड हाँ. मैरिज इज voidable. That means government is considering that marriage, but child marriage does not have any value in the eyes of law. So ma'am, isn't it bit contradictory, ma'am? Rather than going to that example, I would just try to distinguish between these terms. जो आपको डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. क्लास देखिए, 3 टर्म्स होती है which you have to remember. Void agreement, void contract, and voidable contract. I'm repeating myself. Void agreement, void contract and voidable contract. अब हम करते हैं तीनों में डिफरेंशिएट. तो व्हेन वी से void agreement, अब आप खुद देखो, एक void agreement है, एक void contract है, which simply means कि जो void agreement है वो कभी contract बना ही नहीं. It was void from the very beginning. It did not have any value in the eyes of the law from the very inception, right? जिससे कहते हैं void ab initio, void from the very beginning. Then there is this void contract. Void contract का मतलब ये था कि वो जब बना तो वो valid in nature था, वो valid contract था. But because of certain circumstances occurring in between, taking place or supervening, it became void.
That means it was fulfilling the requirements of Section 10 when it was made. But something happened because of which the contract became void in nature. Right? Voidable is something which we just voidable contract is something which we just discussed. जैसे जयति ने भी क्वेश्चन पूछा था अबाउट दोज मेंटल एलिमेंट्स, अगर आई मीन अगर फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा. आंसर था वॉइडेबल होगा, एक्ट सेज सो. नाउ एक एक करके इनके मीनिंग पे आते हैं. वॉइड एग्रीमेंट का एग्जाम्पल is say you just said वो marriage वाला जो example दिया था, and I just showed you in the act itself that there are set of provisions under the Indian Contract Act which are named as void agreements, because the act is saying that, see, these kind of agreements are void from the very beginning itself. They can never be termed as contracts because they're not fulfilling the requirements of Section 10. Because, say, for example, there is one of the most important provisions of the Indian Contract Act, Section 56. Section 56, right? Section 56 of the Indian Contract Act बहुत important provision है, extremely important rather, जो दो तरह की impossibility के बारे में बात करता है. वो ये कहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अग्रीमेंट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल अगर हो जाए तो क्या होगा. राइट? दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है. पहली होती है विच इज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दैट एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड. एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड इन नेचर. वॉइड अग्रीमेंट है बिगनिंग से ही, वो कि भाई बाय मैजिक आई विल डू सो एंड सो थिंग, बाय मैजिक आई विल डू सच एंड सच थिंग, दैट इज अ वॉइड अग्रीमेंट. नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल. Void from the very beginning, from the very inception. Then the other type of impossibility is supervening impossibility, or what we also call as subsequent impossibility, जो बाद में in picture आती है. वो होते हैं void contracts. So when we are saying supervening means वो शुरू से नहीं था, वो बाद में आया, because of which it became impossible to complete the contract. Which means, say for example, now बहुत एक common English case है which is discussed under that part. So this person had entered into a contract with the another person, and wherein this person X had to sell all his crops. Potato crop जो था पूरा उसने अपना Y को बेचना था. Right? Contract दोनों के बीच में हो गया, valid contract था, all the essentials were being fulfilled. Suddenly this entire potato crop got infected. It got infected, and because of which the entire crop got destroyed. Right? क्या इसमें उसकी गलती है? नहीं. Some external happening, some subsequent intervention which rendered the obligation, which rendered the fulfillment of the obligation as impossible. क्रॉप ही नहीं रही, कहां से कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर सकता है? And वो जो नहीं रही crop was not because of his mistake, was not because of his negligence or his wrongdoing. Right? That is what we mean by when we say कि void contract है. जब enter किया गया तब valid था, all requirements were being met. But subsequently certain happening took place which rendered the performance of that contract or the promise under that contract impossible. वो void contract कहा जाता है. Students generally end up doing this mistake कि void contract term use करते रहते हैं. See, something or some kind of agreement जो कभी आगे जाके contract बना ही, जो contract बन ही नहीं पाया, जो requirements ही fulfill नहीं कर रहा, वो तो void agreement ही रहेगा. It is not even capable of being termed as a contract. Right? क्यों वो शुरू से ही या तो impossible है, या तो requirements ही meet नहीं कर रहा. Right? या स्पेसिफिकली अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट void कैटेगरी में मेंशन्ड है. फाइन. देन वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द अदर कैटेगरी जो void कॉन्ट्रैक्ट है. वो शुरू में वैलिड था, बाद में जाके void हो गया, बिकॉज ऑफ विच अब वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल हो गया. voidable इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. देन voidable ये कहता है कि भाई voidable में आपको ऑप्शन या चॉइस मिलती है, void में देयर इज नो चॉइस. Void is void either from the beginning itself or
because of the supervening impossibility taking place. Voidable, as per the Indian Contract Act and generally also, voidable gives you a choice. वॉइडेबल चॉइस या क्या चॉइस देता है, वो ये चॉइस देता है कि जिस पार्टी के ऑप्शन पे वो वॉइडेबल है या जिसके साथ गलत हुआ, उसके पास ऑप्शन है either to continue with it as it is or to exercise the right and get it terminated. If you choose to continue with it as it is despite the fact कि गलत हुआ है, which means you have waived off your right to question the contract or to terminate the contract. एक बार आपने, अगर आपने जानने के बाद कि गलत हुआ फिर भी आप वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए रेडी हो, दैट मींस यू हैव वेव्ड ऑफ योर राइट टू एनी काइंड ऑफ रेमेडी फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो ये तीन चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए. वॉइड अग्रीमेंट, void from the beginning itself, of no value in the eyes of the law, can be because not meeting the requirements of Section 10, can be because Indian Contract Act expressly declares certain kind of agreements to be void in nature, right? And Section 56 Part 1 also, which says an agreement to do impossible act is void in nature, right? Nitesh, I'll just take your question. Give me a minute, please. Uh, uh, then this part, void contract. Void contract is something which is covered under Section 56 Part 2, जो ये कहता है subsequent impossibility या supervening impossibility, that when we started we were on the right track but something else came in between which was not in our hands. It was beyond human influence, right? Human intervention. Something happened which entirely changed the game, and this contract cannot be obligation under this contract cannot be fulfilled at all, right? That is void contract. इसमें कॉन्ट्रैक्ट की कोई गलती नहीं थी, उसके टर्म्स क्लॉजेस की कोई गलती नहीं थी, but then certain happening took place which rendered it to be impossible. Then voidable options. Your the examples are given here for the consent part, right? Let me just see. Yes, Nitesh, you were raising your hand. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good Ma'am, morning, Nitesh. actually, I have a question, ma'am. Yes. Ma'am, what is the difference between agreement and contract? And ma'am, what can be the best example for that, ma'am? Okay. I'll just give you an example here. Just a moment. Yeah. See, we just studied Section 10. I hope you understood the section, Nitesh. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. You understood, right? So that is the explanation to your question. Section 10 states, see, I have laid down certain conditions. If you are able to fulfill all these requirements, आप उस साइड पे पहुंच जाएंगे, that is, आप agreement से contract में transition हो जाएगा आपका. If you are not able to fulfill any of these, सारी requirements fulfill होनी चाहिए. These are not disjunct to be read in disjunctive manner. ये सब conjunctive read करने, ये सारी requirements fulfill होनी चाहिए, right? If any of the requirement given under Section 10 is not fulfilled, फिर आप इसी साइड रह जाओगे. That is, there would not be any transition from an agreement to a contract. Agreement, presence of agreement plus fulfilling of requirement of Section 10 is what gives rise to a contract, right? कई बार होता है ये मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में, if you try to understand things, या फ्लो चार्ट के फॉर्म में you try to understand things, it will be easier for you to understand. So I am trying to because the question asked is valid कि agreement contract में difference क्या होता है. Agreement contract में difference यही है कि an agreement plus requirements of section fulfillment of Section 10 is a contract. Agreement minus fulfillment of Section 10 is equal to agreement only. It will not transform into a contract at all. कोई भी एक रिक्वायरमेंट अगर नहीं इसकी फुलफिल होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. नितेश, इज दिस मच क्लियर? देन आई विल कम टू द एग्जांपल आल्सो. No, ma'am. No, ma'am. It's fine, ma'am. इट्स फाइन. तो आई विल मूव ऑन टू द एग्जांपल नाउ. एग्जांपल भी मैंने इतनी बार ये दिया, मैंने आपको ये चीज दी एग्जांपल में, बोला that if we talk about this aspect of sharp shooter वाला एग्जांपल इतने टाइम से मैंने दिया, या से फॉर एग्जांपल आप फ्रॉड का एग्जांपल ले लो,
या फ्रॉड का एग्जांपल ले लो, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया एंड यू वर ड्रिवन बाय दैट फ्रॉड, क्योंकि उसने आपको फैक्ट्स इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट किए, गलत स्टेट किए, जबकि वो जानता था ये गलत है, एंड आपने माना एंड यू एक्टेड इन द वे ही वांटेड यू टू एक्ट, राइट? आपने उस वे में एक्ट किया, अपनी कंसेंट दे दी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, बाद में यू डिस्कवर्ड दैट इट वाज void in nature. I mean, it was fraud was committed, not void in nature. I'm sorry, fraud was committed against you. So if fraud has been committed against you and you have discovered that, now free consent तो है नहीं, right? Free consent तो वो है नहीं, ऑप्शन मिल जाता है आपको, बट हम ऑप्शन की बात भी ना करें. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, इफ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 10 इज नॉट फुलफिल्ड, वो अग्रीमेंट ही कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, राइट? शार्प शूटर मारा, उसको उसने जाके मार दिया बंदे को, आई मीन दैट पर्सन ही शूट्स, गोज एंड शूट्स दैट पर्सन फॉर व्हिच ही वाज टू बी पेड, राइट? उसको पेमेंट मिल जाए नहीं मिल जाए या जो भी, वो अग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, राइट? एक 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 लीगल रिकॉग्निशन टू एन अग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रिकॉग्निशन है. अग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है, अग्रीमेंट तो बिटवीन फ्रेंड्स भी हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंड्स वांट दिस थिंग कि अगर दोनों में से कोई भी एक अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाया तो दूसरा उसको कोर्ट लेके जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? एग्रीमेंट इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड इन अ वेरी कॉमन पॉपुलर यूसेज है उसका. एग्रीमेंट मींस दोनों पार्टीज, दोनों जो, इफ बोथ द पर्संस अग्री ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस, वो अग्रीमेंट है. एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, अग्रीमेंट हो गया. It is an agreement, both the parties have agreed on the thing. But उसमें फिर एडिशन ये है कि if you are fulfilling the requirements of section 10, that is when you can say that a valid contract has been entered into, right? Jayati, you've raised your hand. Yes, ma'am. Ma'am, Yes. I'm clear with the difference between void and voidable, but just wanted to confirm that in case of unsoundness, will it be voidable or void? Okay. See, in case of unsoundness of mind, the thing is that voidable की बात ही नहीं आएगी. It would only stop at the level of the agreement only. It will not be known as a contract at all. Reason being, it's very clear that it is not fulfilling the requirements of the act, right? अब यहाँ पे आप simple देखो, या at max you can say it is void agreement बोल दोगे आप उसको, because it is not fulfilling the requirements of valid contract, right? Yes, ma'am. void है in nature, it cannot be a valid contract. यहाँ ज्यादा से ज्यादा अगर voidable भी नहीं बोलना, just बोलो कि it is an agreement, it is not a contract. Why? Because one of the essentials is not being fulfilled. It has not been made in between. It does not involve a person who is capable of making a decision on his own, right? Okay, Nitin. यस, पनिश नहीं, पनिश नहीं होगा, पेनल्टी लगेगा, एज इन मॉनेटरी फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं होती है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो ना. सो यस, दैट इज व्हाट आई सेड. तभी मैंने एक टर्म यूज किया था, वेवर टर्म यूज किया जाता है. या व्हाट यू डिड, यू हैड ऑप्शन, यू चोज वन ऑप्शन, इमीडिएटली यू चोज वन ऑफ द ऑप्शन, दैट मींस यू वेव्ड ऑफ योर राइट टू चूज द अदर ऑप्शन. आपको एक मौका मिला, आपने एक चीज चूज कर ली उसमें, अब आप वापस से अपने आप को उस पोजीशन में नहीं ला सकते जहां पे आप वापस से चूज कर सको, राइट? यू हैव वेव्ड ऑफ योर राइट टू चूज नाउ, यू हैव टेकन द डिसीजन. यस. See, he would not be objecting. See, किसी को बताने की बात नहीं नितिन, that is the same thing I was trying to say कि कुछ चीजें ऐसी है जो क्वेश्चन में कभी आएंगी ही नहीं unless and until कुछ गड़बड़ हो या आप रेमेडी सीख करने कोर्ट जाता भी, एनफोर्सेबिलिटी और ये सारी चीजें बीच में आती है. अदरवाइज इसमें आप किसी को बताओ या ना बताओ वाली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. इम्प्लाइड बाय कंडक्ट भी होता है, इन द सेंस दैट आपको पता चल गया आपके साथ फ्रॉड हुआ है, बट यू रिफ्यूज टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इट. आप कंटिन्यू, उसने आपको घोड़ा बेचा, घोड़ा वाज
नॉट इन अ परफेक्टली वेल कंडीशन, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, बाद में आपको फ्रॉड डिस्कवर हुआ, बट फिर भी आपने अपना घोड़ा अपने पास, उसका घोड़ा अपने पास रखा है, उसको पैसे आप पहले ही दे चुके हो, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, नाउ यू कंटिन्यू owning that horse, and you do not object to it, you do not wish to terminate the contract. Just give me a moment. Yes, I think Nitin, I have answered your question, right? Do you still have? Yeah, right. Okay, Deepti. Okay, Nitin. Deepti. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, Deepti. Ma'am, in extent to Jayati's question, where you Mm-hmm. answer that the contract is no more if the person find unsounded. So, ma'am, in that case, who will claim damages? Like damages, how they would get claimed? सी डैमेजेस, पहली बात तो डैमेजेस क्यों क्लेम करना चाहोगे आप? व्हाट वुड बी द रीजन फॉर क्लेमिंग डैमेजेस? Why are you willing to claim damages? If you're saying there is no valid contract ever entered into between the parties, on what grounds are you trying to claim damages? That is what we have to see. कॉन्ट्रैक्ट में तो डैमेजेस तभी मिल पाएंगे जब देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो ब्रीच कहां से होगा? ब्रीच नहीं होगा तो डैमेजेस नहीं हो सकते। कॉन्ट्रैक्ट में तो रेमेडी मिल नहीं सकती, बट इफ देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, इफ यू थिंक सो, एट मैक्स आप टॉट में कुछ करके किसी तरह से उसको लाके, बिकॉज यू हैव डन डिस्कस दैट इंजूरिया साइन, डैम नो डैमनम साइन इंजूरी, ऑल दोज थिंग्स यू आर डिस्कसिंग, यू आर बीइंग डिस्कस्ड देयर, राइट? यू बीइंग टॉट देयर, but otherwise, unless and until there is a right, there is an obligation under the contract which has not been fulfilled or a breach of it has been committed, आप damages के लिए नहीं जा सकते। अब ये जरूर होता है कि आपको एज सच कोई मॉनेटरी डैमेज ना भी हुआ हो, बट ब्रीच कमिट हुआ है तो आप कोर्ट जा रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कोर्ट विल ग्रांट यू नॉमिनल डैमेजेस, राइट? बट देन अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कह नहीं सकते उसे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आप डैमेजेस नहीं क्लेम कर पाओगे फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, दीप्ति? Yes, ma'am, got it. यस, ओके, नितेश। Yes, ma'am. Ma'am, I have more questions. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, प्लीज Ma'am, गो अहेड। can I use agreement as legal terminology, or only contract is legal term, or both are legal term? Okay. See, I would like to say here that contract तो legal term है ही है, right? लीगल टर्म है, लीगली लीगल टेक्निकल टर्म जो भी बोल सकते हो, यू कैन से दैट। एग्रीमेंट इज ऑल्सो अ टर्म जो जनरली लीगल फील्ड में ही यूज किया जाता है। एग्रीमेंट इज नॉट अ टर्म विच कॉमन मैन यूजेस, राइट? आप लोग सारे सब लॉ कर रहे हो, जिसने लॉ नहीं किया हुआ है, जिसे लॉ के बारे में नहीं पता, वो इतना अग्रीमेंट अग्रीमेंट टर्म यूज करेगा नहीं, राइट? अनलेस एंड अनटिल कुछ, और अगर करेगा भी तो उसको अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, तो वो अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही उसको बोलता रहेगा विदाउट नोइंग कि भाई अग्रीमेंट से आगे बढ़ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और जैसे सेल डीड है, अब कॉन्ट्रैक्ट तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे अग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, राइट? जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। सो वी लीगल पीपल नो द डिफरेंस बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही लीगल टर्म्स है, आई वोंट से कि एक लीगल टर्म है और एक ऐसा ही टर्म है, मतलब नॉर्मल टर्म, दोनों ही लीगल सेंस में यूज होते हैं, बट अगेन वही बात आती है किस कंटेक्स्ट में यूज होता है, दैट इट डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में कब अग्रीमेंट टर्म यूज करोगे, किस सिचुएशन में कब कॉन्ट्रैक्ट टर्म यूज करोगे, राइट? जैसे वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हमने अभी डिफरेंस पढ़ा। वॉइड अग्रीमेंट को कभी कॉन्ट्रैक्ट बोल नहीं सकते, बोलोगे तो इमिडिएटली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि आप बताएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, इज इट फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो दोनों ही टर्म्स लीगल हैं, बट किस सिचुएशन में कौन सी टर्म यूज करनी है,
that you have to see, right? Depending on what situation you are facing, you will be deciding कि वो agreement है या contract है. और अगर हम ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि अब क्या अग्रीमेंट हो रहा है और क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या डिफरेंस है, सो तब वी आर एट द सेम फुटिंग एज व्हाट अ कॉमन लेमैन इज, बिकॉज उसके लिए वो तो कॉन्ट्रैक्ट को भी अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही बोलते हैं, right? They don't know what is the difference between an agreement and a contract. We know the difference between agreement and a contract, and depending on the example or depending on the situation we have in front of us, we would be deciding whether it should be termed as agreement or it should be termed as contract. Nitesh, have I answered your question? Yes, ma'am. That mean I can use in different situations. Yes, you can use both the terms in different situations. Okay, ma'am. Thank you. Right. Okay. So Jayati, I'm just checking the chat box because I can see some comments have come in here, some questions, submissions have come in here. Just quickly see those. Then I would like to wind up today's class because फिर attendance लेने में भी time लगेगा. Plus I need to rush to university today for some work, and again I have to come back and then continue with my classes with third year. So, and it takes me almost an hour to reach DU from my place. So just need to rush. Uh, just a moment. Let me quickly go through it. Jayati, I think I've answered your question. Voluntary, involuntary intoxication wala. Shahid says, ma'am, Bihar government banned liquor on 5th April on 2016. So what about those contracts which made by liquor seller? Okay. Shahid, your question, answer to your question lies under section 56 of the Indian Contract Act. मैंने अभी जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस बताया था, मैंने कहा वॉइड अग्रीमेंट वो है जो बिगनिंग से ही वॉइड इन नेचर है, राइट? और मैंने एग्जांपल्स बताए कि यहाँ तो सेक्शन 10 रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता, यहाँ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नहीं तो सेक्शन 56 का पार्ट 1 विच टॉक्स अबाउट इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, दैट इज बिगनिंग से ही ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, राइट? दूसरा हमने डिस्कस किया था वो वॉइड अग्रीमेंट होता है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था सेक्शन 56 पार्ट 2 which is dealing with supervening impossibility और subsequent impossibility. That is, जब बना तो valid contract था, later on it became void in nature because of situation or conditions not in your hand. ये जो आपने एग्जाम्पल दिया है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, राइट? गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, because this is something which was not in your hands, and because now it has happened, you cannot do anything, right? It is not in your hands, you could not have stopped this ban, right? This is not in your hands. Supervening impossibility hai which falls under the category of government intervention. So ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाना चाहिए. So अभिषेक, it fall under 56 to सेक्शन clause 2 में. 56 पार्ट 2 बोलते हैं बिकॉज वहाँ क्लॉजेस अलग से डिफाइंड नहीं है. दिस इज आवर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 56, that we say section 56 part 1 deals with initial impossibility, that is void agreements, void ab initio, and 56 part 2, that is the second paragraph or second line of section 56 part 2, it deals with supervening or subsequent impossibility, right? And a small question, हाँ. ma'am. Consensus Yes. ad idem जो है हाँ. for contract और for agreement या फिर agreement के लिए वो जरूरी है consensus idem? हाँ हाँ बिल्कुल है. अग्रीमेंट का मतलब ही वही है ना. अग्रीमेंट का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज ने एक चीज पे अग्री किया है. अग्रीमेंट तो यही हुआ. ऑफर भी, उसमें ऑफर भी है, उसमें एक्सेप्टेंस भी है, उसमें प्रॉमिस भी है, सब है, राइट? ऑल Okay, दीज ma'am. Okay. फैक्टर्स आर प्रेजेंट देयर. सो अग्रीमेंट तो वो है, कंसेंसस एड इडम है, मीटिंग ऑफ माइंड्स है, बट गलत चीज पे मीटिंग ऑफ माइंड है. यहाँ फिर सेक्शन 10 की कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही. किसी के साथ फ्रॉड भी करोगे, वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, जब उसके साथ फ्रॉड हुआ उसे तो नहीं पता था, तो मीटिंग ऑफ माइंड तो था उस चीज पर, ही डिड नॉट नो, राइट? Abhishek Bhadana is asking, he says, ma'am, why child marriage comes under voidable category? Why not it comes under void category? Because we have an act, we have a statute which deals with it. There's a separate statute dealing with child marriages. जो वो act कहता है वही law है, because it does not say it is void in nature.
Shahid says it means Section 10 is a bridge. When any agreement crosses that bridge, it becomes contract. Absolutely right. You can say it is a bridge. That is why I said कि अगर ये सारी requirements fulfill करी तो आप उस side जा सकते हैं उस bridge के. That is transformation from an agreement to a contract will take place. If you are not able to cross that bridge, then sorry, done. Cannot. Ayushi, I'll just explain it. अमन सेज मैम वॉइडेबल कॉन्टैक्ट तो ऐसे रोज ही मिलने होते हैं जैसे हम दूसरा समझने के आते ओके सी वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में अमन नहीं आएगा. It is not a voidable contract. It is not a contract as such. In the next class, when we'll be meeting, the first topic which I'll be discussing with you would be intention to create legal relationship, and I'll be discussing cases related to it. एक आधा केस भी डिस्कस करना शुरू कर देते हैं. प्रोविजन और लॉ तो हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं. नेक्स्ट क्लास व्हेन विल बी मीटिंग विल बी डिस्कसिंग केसेस. मैं आपको आज बता भी दूंगी कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाओ उस केस को. तो वील बी डिस्कसिंग. देयर इज अ जजमेंट इन योर मटीरियल. Balfour versus Balfour, case number 3 of your case material. You can see on the case mat here on my screen right now. Case number 3 of your case material, which is Balfour versus Balfour. ये पढ़ के आइएगा. अगली क्लास में हम ये केस डिस्कस करने वाले हैं. It will be dealing with intention to create legal relationship. See, one of the hidden things, सेक्शन 10 में इंटेंशन का एज सच कोई जिक्र नहीं है कि इंटेंशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. राइट. हाँ, फ्री कंसेंट लिखा हुआ है. फ्री कंसेंट इज अ डिफरेंट थिंग. फाइन. But intention as such, intention to create legal relationship as such is not mentioned under section 10, but it is read to be a part of a valid contract. एक ये फैमिली अरेंजमेंट्स, सोशल अग्रीमेंट्स, ये सिर्फ अग्रीमेंट्स तक ही सीमित होते हैं. दे कैन नॉट बी कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तब टर्म यूज की जाएगी वेर इन इट इज बिलीव दैट बोथ द पार्टीज वर विलिंग टू हैव लीगल रिलेशंस बिटवीन देम. They were willing to drag each other to court or take action against each other in case either of the party does not fulfill the contract, right? So it would not be coming under the category of contract at all. Voidable दूर की बात. I'll be discussing this in detail in the next class, right? And Balfour versus Balfour आप लोग सब पढ़ के आइएगा. I would be quickly taking your attendance now. It's 9:45 almost. So जो आज किया section 10 obviously is the most important part of the Indian Contract Act. So we have discussed too many topics under it today, and I tried my best to give you examples wherever it was possible, right? I would be starting with a discussion on intention to create legal relationship and Balfour versus Balfour in the next class. And then we'll be proceeding ahead to different other topics, invitation to treat, general offer, and discussing cases on that as well. Yes, Aman? Ma'am, today is my first class, so I am in your register. I'll just check, Aman. Okay, I'll ma'am. just check. I think you would be there, but I'll just quickly check. When I'll be taking attendance, I'll check then. If it is not, if your name is not there, I'll add your name there in the register. Okay, Okay, ma'am. right. Excuse me, Yes, Bhumika? सेक्शन 10 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, वो क्यों नहीं लिखा हुआ, मतलब वो क्यों नहीं एडेड है? एनफोर्सेबिलिटी वो एट लॉ अलग से ऐड नहीं हुआ. सी, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया. एनफोर्सेबिलिटी मीन्स यू कैन go to the court for claiming remedy in case that agreement has not been, it has, the contract has been breached, right? Enforceable by law means you can go to the court, approach the court for claiming remedy. That is not a requirement. If the requirements are fulfilled, then you can go to the court, then you can say it is enforceable, right? Requirements अगर fulfill नहीं होती हैं तो वो enforceable नहीं है. That is what enforceability is not an essential requirement. If requirements are met, then it is enforceable. Bhumika, did you understand? यस मैम. ओके. Right, good. Let me just open your register quickly and take all your attendance. एक मिनट दीजिए बस. Please pay attention to your roll call. And एक चीज और मैं बोलूंगी, because after this class now we will be meeting on Wednesday only directly.
So एक काम कीजिए आप, apart from Balfour versus Balfour, do read case number 1 also, that is Carlyle versus Carbolic Smokeball Company. We would be discussing that as well, right? So two cases you have to go through, case number ओके 1 मैम। and case number 3, right? जी मैम जी। Yes, ये दोनों cases आप पढ़ेंगे, and next class में we'll be discussing these cases. Aman, is your roll number 213154? यस मैम। हाँ, मैंने ऐड कर दिए थे आप लोगों के नाम, बाद में आपको सेंटर जो चेंज हुआ था, आई हैव ऑलरेडी एडेड द नेम्स, सो यू आर देयर इन माय रजिस्टर. ओके मैम। मैम मेरा फर्स्ट क्लास है ना, मैं ट्रांसफर होके उधर से इधर हाँ, आया नहीं, हूँ। मुझे पता चल गया, इसीलिए मैंने जैसे ही आपने ये चीज बोली मैंने तभी रजिस्टर में देख लिया, मैंने ऐड किया हुआ है आपका नाम. जी मैम। आई जस्ट कॉल आउट द रोल नंबर्स, रोल नंबर मैम नाम दोनों करती हूँ जल्दी से. मैम मैं भी उधर से आया हूँ, सीएलसी से इधर। विकास, आपका नाम भी होगा, जितने भी लोग आए हैं सबका नाम है, डोंट वरी अबाउट दैट. लेट मी जस्ट मैम टेक द अटेंडेंस. अगर किसी का नाम